are we going to start the associations where we left? Yeah, we are going to do that, and just so that I know that you are on the same page, can you tell me, like, if I have to configure normal foundation objects which are not MDF, where do I have to go? Normal foundation object which are not MDF. Manage configuration, manage data, configure object definition. That is for MDF objects. So that those which have migrated, those which have not migrated. Wait a second. So those which are not migrated, for that we have to go to. So those which are not migrated, for that I think manage business configuration. No, manage business configuration is for succession data model. तो हम लोग कोडिंग पे जाते हैं, right? We go to Ah, that we go to the XML. XML only, yeah. So then we go to the XML. XML में XML कैसा दिखते हैं? अच्छा, those which has been migrated, उनकी configuration के लिए we go to the manage data. नहीं, उनकी configuration के लिए we go to configure configure the अच्छा, object और data definition, storage के लिए manage data. manage data. और ये जो नहीं गई है, उनके लिए we go to the which has not been migrated, तो हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं मैनेज ऑक्टेन जॉब स्ट्रक्चर में. नहीं गई है तो कॉन्फ़िगरेशन हम डायरेक्ट करेंगे एक्सएमएल से. जो जा चुके हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन से एंड डेटा स्टोर करेंगे मैनेज डेटा में. और जो नहीं गई उनका डेटा स्टोरेज होगा मैनेज ऑर्गेनाइजेशन पे एंड जॉब स्ट्रक्चर में. करेक्ट? राइट. Yeah, this is typically how the XML is going to look. Like, all these are the ones which have not migrated, and they are associated to different objects. These are associations in between. Most of these associations which you see here are valid when associations. Okay, Yes, we have two associations, right? Composite and valid when. they are valid when and composite associations. Okay, so these associations that you see here are the valid when associations, which can have a multiplicity of 1 to 1 or 1 to many. Okay, so under valid when we have like 1 to 1. so your task is to your homework for next class is for all the foundation objects that I have taught you. So I've sent you notes for that. You have to tell me that which are the what are the relationships, standard relationships that they have. ठीक है? Relationship मतलब what are the standard associations that they have with other. Like if I talk about pay range, so pay range is associated with, I can see pay grade, geozone, and legal entity. All are one-to-one association. Similarly, if I talk about location, then they are associated by one-to-one association to geozone and one-to-many association to legal entity, which means that like many legal entities can share one particular location. Okay, it is like that. Okay, so I have to find out like whether the associations we have, these are one to one or one to many, which type of association relation. No, you have to find out association one to one, one to many plus like associated with what. So you have to make an Excel sheet. Left hand side में object होगा. जैसे when I started teaching you, I gave you a list of all the foundation objects. I have sent you an email with that class notes also. Okay, so there is the org structure, the job structure, and the pay structure. So from all the three structures, whatever I have taught you, you put on the left hand side, and then you on the right hand side you have to say that okay, valid when associations, on the right hand side, and these are the what association that like location one to one geozone, location one to many legal entity. वैसे ही for all the other objects जो भी है. So for all those which have not migrated, you will find it here. For all those which have migrated, you will find in configure object definition. Okay, so if you do this exercise, it will be a good learning for you. Okay. So since we were talking about associations, what is the association basically? So valid when associations and composite association, two types of associations. Yeah, that is fine. That is like theory. But what is association? Association is basically the relationship. So relationship. So in like any structure, we will have business unit. We will have some department, division. Okay. Location. So all these are interlinked with each other. Okay, they are related to each other. Maybe not always directly, but indirectly also. So might be business unit is linked to department, department is linked to division, division can be linked to location, or maybe location can, or maybe division can be, or department can be linked to
position. So it can be like one to many or one to one all the time. It can be like it can be done to multiple. One object can be linked to multiple objects or just to one object. Like location group can only one location can be grouped only to location group. If there is single like one location cannot belong to multiple location groups. That is logically not possible. Pune can only belong to Maharashtra. It cannot belong to Maharashtra, West Bengal, or Delhi, like that. Okay, so all these are logical groupings. So this is something theory that I am teaching you, but it is better that you go into the system, take out all the objects, open the XML once, and then take out the objects, see what kind of associations they have, one to one, one to many, what it is. So I want you to do this exercise basically. So if I come back to here, if like if you want to see configure object definition, you can always type here configure. So most of the standard objects that I am telling you about, they are already configured in the system. Okay, so and if you face any problem when you are doing this, you can always send me on WhatsApp. I will clear your doubt. So if it is like business unit I'm talking about, I'll go to business unit, and here I will see what are the associations. Where are you going to find associations? It is written associations here. Okay. I just want you to check the valid when associations, not the composite one. So this So is if you written this like the legal one to many and if you want to destination. see it is one to many, and this like Microsoft Limited is basically a legal entity, a company. So this is a business unit. The business unit basically can be linked to legal entity. It can be linked to many legal entities. It can be linked to many departments. Okay, and destination. But why have they given with Microsoft? I don't know what they have done. Okay, what is the difference basically between the valid one and the composite? Yeah, so valid when is basically when two objects are related to each other. But in composite association, it is like an association where there is a child object and a parent object. So the child Okay. object resides within the parent object, and it cannot exist independently. Okay, so I will show you. So we generally have composite associations where when we have this country specific corporate data model. Okay, Country specific or so this is a generic corporate data model, and then I have already explained what is a normal association to you. I will come to composite association in some time, but before that, let me show you what is a country specific corporate data model. So we have an XML for a country specific corporate data model as well. So this is a country specific corporate data model. Now, before I go into the code, like these are fields which may have these are fields in the foundation objects which can have country specific values, like it will be different for different countries. Okay, okay. to give you an example, like we have got all these fields here, business unit, department, division, location. Okay, position is not in the corporate data model, but like these are the various things: location group, but all are not like business unit, department, division. These cannot have country specific values, but location can have country specific value. Now when I say location, basically this is a corporate data model foundation object. So this will have several attributes. When I say attributes, as in location ID, and then this like when I'm going to record a location, I will have some address for that location also. Location as a field, I can define that. Okay, it will have address line 1, then address line 2, then pin code, then state, then country. Okay, if I am going to define location as a field, so location, may I have to keep this provision also where I can record the address of the location. Correct. Now, don't you think what I have written here, address line 1, address line 2, pin code, state, country, this is to India specific. Yes. Okay, so this is an object which has got which can have country specific values basically. Like if I say location, it is not always going to be the same. Depending upon the country, this is going to change. How I'm going to show you. Let's say USA. Okay, so
USA, the address field, see how it is maintained. Address line 1, 2, 3, city, country, state, province, zip code, country. They maintain it like that in the US. But in the same way, if I talk about France, then theirs is their format is like this. In this data model, corporate in this country-specific corporate data model, different countries can have different ways in which they record their address, okay, their corporate address. Now, when I say location and I link it to corporate address, why don't I link it to home address or temporary address? Because location is, I'm not, this location field that I'm creating, this is for the company. This is not for people who work in the company. For them, there is a different address field. But this location is like, where is the company located? So it will always be corporate address, okay? Okay. So we have very few the country specific corporate in the corporate data model. Sorry, in the corporate country specific corporate data model, there are very few fields which are country specific. So location, and inside location, corporate address is one such field. Apart from this, there is job classification and legal entity. These two fields also have country specific values. Okay. Now, when I say legal entity and job classification, am I going to find them in this particular XML? Legal entity. And legal entity and job classification, am I going to find them in the XML? So no, legal entity is not Has already here. migrated to MDF. Okay. Yeah. So, how is legal entity a country specific this thing? So let me show you how it is. Okay. So So legal let me, entity check from configure object definition. yeah, one second, I'll show you. Let me say that what are the country specific corporate data model fields? They are like legal entity, job classification, and location, corporate address. Okay, and this is XML, which means it is not migrated. Location is also XML. Location only I'm saying. Location may corporate address is the other fields. So this is not migrated yet. But job classification and legal entity have migrated. So they are like MDF objects. Now I showed you how we can make like how we see it here. Like if you don't see India here, all you need to do is basically you go here. Okay, so we are in this HRIS field. See, all this is defined here. If I don't want so many languages, I will just simply delete them and just keep the English one. Okay. Everything they have kept so, and that is why it Mm-hmm. becomes confusing for a new person. Anyways, okay. So this is like the country, then address one, address two, everything is defined here. So just as it is done there, I will just copy this code and make one for India also. And in this table view, you will see that another line has added called IND, and here I can say address one, address two, city, pin code, city, country, pin code, city, country, state, pin code. Like that, I can also make. Okay. Okay. But if it is the one which has migrated to MDF, I will stop recording for 1 second. Manage data. Okay. Let's take this record. Okay. It's a legal entity. Mm-hmm. Now let's see country. This is USA. So if I change this country, Indora, what happens? See, there were some Mm-hmm. fields they went away basically. So this legal entity basically, or maybe if I make it to Bermuda, then what happens? Acha, legal entity is itself a country, right? No, no. See, these are the fields in legal entity. So let's say that you have So legal basically, entity called. so I have to, if I have to, let's suppose I have my organization in four different countries. So I Hmm, have to create one legal entity, let's suppose for Germany, the second legal entity for France, third for the India. So legal entity means the country where your organization is situated, like that. no, no, no. Legal entity is the company code. Company code. Okay. Understand what is the company code? Which Um. has its own chart of accounts. Okay. Basically, they have their own profit, own loss. Like they might be under a different an umbrella. Somebody might have acquired it, but their accounting is done. Let's say that you are going on site, okay, from your Mm-hmm. company. So that is not, you're not going to a different legal entity. If you are going for short term, then you are going for a global assignment.
your legal entity is not changed. But if there is a country transfer, then you will have to be, Hmm. because let's say I take Cognizant is a company. So it is not just that like it's a total, it's one company, but it is made up of several smaller companies which are like registered in different countries. Like you cannot register it in one country and then you can have offices in different one. You'll have to open your own company in the other country also, and there you will have to transfer the person if it is long term. So there is a like your salary is then paid by that other country. Similarly, in bigger organizations, let's say that Tata Chemicals acquired a company in Africa and then a company in USA. Let's say I'm giving you an example. So Hmm. those are independent companies. Only acquisition has been made. Now, when Tata Chemical will basically show its profit and loss at the end, then maybe the net worth is calculated. Then all these will be considered. But apart from that, these are totally different companies, separate with separate CEOs, separate management. Maybe their CEO is reporting to somebody who is there in India because it has been acquired. But like they're separate companies is what I mean to say. So there is, see, when I'm making a legal entity, I have to maintain all these fields for that particular legal entity. What is the country, what is the currency, and depending on the country, if there are any further fields that are needed to be maintained here. Okay. So these things, this extra fields that you are seeing, these are what? These are country specific. If I remove it from USA to a different company, see, it will go away. So what you see here when I say USA, then this is basically a child object, Okay. and legal entity is the parent object. I will show you how. Okay. Let's say, let me take Netherlands. Okay, let's take something for which there is nothing there. Let's take Mm-hmm. Albania. Nothing is there. Okay. Okay. So So when you for when this, you there is no child. I will show you. See, this is here when you see the legal entities, you will see that if I show you, you will see that there is okay. So this is the data part of it. Now I will go to configure object definition. Here, if you go to object definition and you write legal entity, you see this legal entity USA, Thailand, Spain, South Africa, Saudi Arabia, Russia. These are all child objects basically. They will not be able to exist independently. Okay. So basically, okay, just open one. So under this legal entity Russia, what we have defined is the fields, right? The- These fields are maintained here. Now, this is like legal entity Russia. Okay. Hmm. So, where can you use this legal entity Russia? You cannot use this independently. You can only use the field legal entity independently. Like if I go ahead and I want to create a new legal entity, I cannot do it like legal entity Russia. I cannot create like I can create a legal entity which is based out of Russia, but if I want to create a new object, new when I go to legal entity, do I see legal entity Russia? Yeah, Canada, yeah, Netherlands. That I don't see. I get a new legal entity here I can create. Those are child objects. Now, how are they child objects? I'm going to show you. Okay. So basically, what I have understand is like from the configure object definition, we create the legal entity Russia, maybe for example, and under that legal entity, the data we can put through manage data. One second, I'll show you. Okay, here it is. Now, here I want to have some information called legal entity Netherlands, which should only be visible when I choose the country as Netherlands. So what will I do? I will go here and I will create a new object. Call it as legal entity underscore NLD. Okay. Effective dating always legal entity underscore NLD कर देते हैं इसको, ठीक है? From Okay. effective date is always from present, and API visibility is editable, status is active, MDF version history. Now I will make certain fields here, and these fields I will call as Dutch. You're creating this in manage data. Yeah. No, sorry. I'm creating a configure object definition. I'm creating an object, a child object I'm creating. I'm creating this as a child object and I'm going to link it to the parent object. So the child object is country specific. Okay. So
what I'm going to do is cust underscore dut core reg. So what is child object basically? Like address line 1, line 2, line 3, these are the child object, right? No, that address line 1, 2, 3 as a whole, this corporate address is a child object. So, like as soon as you choose the a country, then what happens is the whole structure of the address changes. Have you noticed? It is not like Okay. just one or two lines, the whole structure. Those Every country will have its own structure. Here also in legal entity, I am trying to create a child object, like certain fields which would only be country specific. So whenever I'm going to create a legal entity, let's say that I'm opening a country company XYZ, and I am when I'm opening it in India, it is fine. But when I am opening another company, let's say handy heaters, okay, in Netherlands. So in Netherlands, always there is a requirement that some kind of a Dutch registration numbers and a Netherlands BV code is always maintained against the company code. Okay, let's say it's a legal requirement. This is just for teaching. I am telling you. Let's say it's a legal requirement. Then in that case, I have to create these fields for the legal entity. Now, I don't want that every time I create a legal entity, I will get these two fields. I only want this when I create a legal entity in Netherlands. Correct. So under the legal entity Netherlands, we are creating these fields. no, I am just creating a child object now. Forget about legal entity. Okay, I'm just creating a child object. So I'm creating Dutch registration number. This is something which is, let's say, legally needed in whenever you open a new company, it is needed in Netherlands. Okay, so I am creating this the small child object in which I am putting these two fields. You have to record that. Okay, and LDBV. Okay, and I will another one is Netherlands BV code. Okay, so I put all this here and I click on save. So my child object is okay. मैंने एक child object create किया. This is a particular requirement for the country of Netherlands. So इसलिए मैंने cust underscore legal entity underscore NLD करके create कर दिया. अब मुझे इसको किसके साथ लिंक करना है? मुझे इसको parent object के साथ लिंक करना है. What is the parent object? Parent object is legal entity. Not legal entity USA था, ये सब child objects हैं. मुझे चाहिए पेरेंट ऑब्जेक्ट लीगल एंटिटी. ठीक है, इसके साथ मुझे अभी जो मैंने अभी बनाया उसका नाम क्या है, याद है आपको? डच क्या था, डीटी? नहीं, वो तो डच, तो वो दोनों फील्ड्स बनाए मैंने उस लीगल उस अच्छा, पर्टिकुलर लीगल इसमें. एंटिटी अंडरस्कोर एलएलसी करके आपने बनाया था ना? एल ई अंडरस्कोर एनएलडी करके बनाया. ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ, मैं एक नया एसोसिएशन क्रिएट करता हूँ. ठीक है, ये देखो ये सब एसोसिएशन है. तो इसमें मैं करता हूँ टू लीगल एंटिटी एनएलडी. ये 1 to 1 होता है हर वक्त. और इसको मैं किसके साथ करना चाहता हूँ, इसको मैं जो अभी मैंने बनाया है एनएलडी, ये कस्ट अंडरस्कोर एलई अंडरस्कोर एनएलडी के साथ मैंने इसको ये कर दिया. दिस इज अ कॉम्पोजिट एसोसिएशन. ओके, एक सेकंड, लेफ्ट में हमने क्या दिया? वन सेकंड, लेफ्ट में यू हैव गिवन द नाम रख दिया कि मैं इसको लीगल एंटिटी के साथ एसोसिएट कर रहा हूँ और ये अपोजिट एसोसिएशन है, 1 to 1 है. और यहाँ पे जो हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैंने उसको लिंक कर दिया उसके साथ. तो बेसिकली एक जो हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया था वो हमारा था कस्ट अंडरस्कोर एलई अंडरस्कोर एनएलडी, राइट? जी जी जी. ये हमने बनाया था और हमने हम्म, उसको 1 to 1 मैप किया, कॉम्पोजिट हमारा एसोसिएशन हुआ. और जो लेफ्ट हाँ, हैंड साइड पे जो आपने जो वैल्यू दिया है वो आपने खुद से दिया है, राइट? लाइक दिस कुछ यू भी हैव नाम, गिवन एज जिससे कुछ कि भी नाम पता दे चले. दिया. ठीक तो ठीक है, अभी गॉट मैं इट. अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं सेव करता हूँ. ठीक है, अब हम एक नया लीगल एंटिटी बनाने जाते हैं. ठीक है, लेट अस नाउ गो अहेड एंड क्रिएट अ न्यू लीगल एंटिटी. देखते हैं कि ये फील्ड आते हैं कि नहीं. ये देखो ये फील्ड्स आ गए, पर इसमें गलत क्या है? मतलब हमने कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन इज बेसिकली एन एक्सएमएल फॉर अस, राइट? तो वहाँ सिमिलर टू हाँ दैट, तो हाँ हाँ हाँ. वहाँ पे हमने उसको डिफाइन किया. हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर था, वहाँ पे हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वो हमारा टोटली बैक एंड है जहाँ पे हमने डिफाइन किया. हाँ, अभी हाँ, फ्रंट एंड पे हम लोग अब हम क्या बनाने वाले हैं, हम लीगल एंटिटी बना रहे हैं. लीगल एंटिटी मतलब हम लीगल एंटिटी नीदरलैंड या डेनमार्क नहीं बना रहे, हम हाँ, सिर्फ लीगल एंटिटी बना रहे हैं. इज हाँ, इट हाँ, दैट वी आर डूइंग?
मैं एक तो लीगल अभी एंटिटी हम बनाता हूँ, क्या नाम है, XYZ कॉर्पोरेशन। अच्छा, तो अभी अगर हम जैसे लीगल एंटिटी बना रहे हैं तो वहां पे हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखा था कि जब भी हमारा लीगल एंटिटी होना चाहिए तो वो हाँ हमारा लीगल एंटिटी नेदरलैंड्स का जो दो वो है वो वैल्यूज फेच होना चाहिए। हमने लीगल एंटिटी सेलेक्ट किया तो ये दोनों वैल्यूज आ गए। नहीं, पर इसमें गलत क्या है? इसमें गलत आई गेस ये है बिकॉज हमने उसको नीदरलैंड्स दिया था तो वो हाँ नीदरलैंड्स के साथ ही फेच किया था कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पेरेंट कंडीशन ये है लीगल एंटिटी एंड चाइल्ड कंडीशन की लीगल एंटिटी नीदरलैंड्स के केस में ही वो दोनों फील्ड जाने चाहिए हाँ थे। इज इट एग्जैक्टली। दैट इट इज हाँ रॉन्ग? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ओके ओके। ये देखो, ये जो NLD को मैंने इसको लिंक किया है, मैंने मैंने डिफाइन तो कर दिया, तो ये एसोसिएट हो गया उसके साथ, बट इसमें मैंने कोई मतलब कंडीशन हम्म। नहीं डाला। तो कंडीशन कैसे डालते हैं हम लोग, एक चेक करते हैं। इसमें कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन करके होता है, ठीक है, कोड कॉपी करते हैं। तो थाईलैंड के लिए किया हुआ है, वैसे मैं नेदरलैंड के लिए यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फील्ड डालता हूँ कंट्री ऑफ, सॉरी, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड चेक करेगा। जब इसकी वैल्यू नेदरलैंड होगी, नेदरलैंड का कोड है NLD, तभी ये काम करना चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ ये। यहाँ पे जाकर हम लोगों ने एनएलडी वाले में कंडीशन लगाया दैट ओके यहाँ पे स्क्रॉल यहाँ डाउन पे आपने कंडीशन कंडीशन है कि कंडीशन फील्ड आईडी। फील्ड आईडी, जब कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन कोड जो होता है, ये इनका बैकएंड का ये है, कोड है, जो कि मतलब सिंटैक्स है, कंट्री ऑफ ये रजिस्ट्रेशन ऑटो कोड। जनरेटेड है, दिस इज ऑटो जनरेटेड ये फील्ड आईडी। नहीं, इज नॉट ऑटो जनरेटेड। मैंने मतलब दिस इज लाइक अ सिंटैक्स, तो मैंने वो थाईलैंड का जैसे मेंटेन किया हुआ था, मैंने वैसे ही कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो ठीक है कंट्री ऑफ कंडीशन का वैल्यू मैंने दिया NLD। कंट्री ऑफ अच्छा ठीक है तो कंडीशन वैल्यू हमने दिया एनएलडी तो बेसिकली अभी हमारा कंडीशन ये हो गया कि जब भी हम एनएलडी सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों फील्ड जाएंगे। तो ये कंपोजिट एसोसिएशन में ऐसे होता है। तो मैंने अब इसको सेव कर दिया, और फिर हम जाएंगे मैनेज डेटा में। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो, अभी वो चले गए। अभी मैं जैसे ओके कंट्री को NLD सिलेक्ट करता हूँ, ये दो और यहाँ पे बने हुए थे, तो वो भी आ गए एक्चुअली बाय अच्छा डिफॉल्ट वहाँ पे भी है। हाँ तो ये हटा सकते हैं हम लोग जाके वहाँ पे। तो ये नेदरलैंड्स रजिस्ट्रेशन, टेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और नेदरलैंड्स BB कोड आ गया जैसे कंट्री। पर इसको मैं अगर USA करता हूँ तो ये चला जाएगा। USA के लिए ये ओके अलग, जिसमें उनके कंट्री में होता है कि जैसे आप कोई कंपनी खोलोगे तो आपको एम्प्लॉयर ID देना पड़ेगा, उसका मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब लेट्स से कि मतलब आपका सक्सेस फैक्टर HR में है और बाकी सब SAP में है, तो आप कंपनी कोड मेंटेन करना है, तो यहाँ पे आप कंपनी कोड मेंटेन कर दो, मतलब आपके इसके लिए। So this is basically what a composite association does, and this is also used in the country specific corporate data model. Okay, ओके ये सक्सेशन डेटा मॉडल, सक्सेशन डेटा मॉडल को हम लोग डेटा मॉडल, जस्ट डेटा मॉडल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सक्सेशन डेटा मॉडल, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स हम कलेक्ट करते हैं। फाउंडेशन में हम क्या करते थे, ये राइट सब। या तो अभी हम लोग सक्सेशन डेटा मॉडल पे जाते हैं। ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है आपको? हम्म यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं, कुछ भी नहीं है, ये मतलब एक एक फील्ड मेंटेन होती है यहाँ पे। और ये ओके किस टाइप की फील्ड्स मेंटेन हो रही है आपको दिख रहा है यहाँ पे? डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, मैरिड, एम्प्लॉय रिलेटेड। अनलाइक द कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, जहाँ पे 80% has been migrated to MDF और 20% स्टिल रिमेन्स, यहाँ पे 100% माइग्रेट हो चुका है MDF में ये, ठीक है। वन सेकेंड सो बेसिकली दैट मीन्स कि हमारा सक्सेशन डेटा मॉडल जो हमारा बेसिकली 100% माइग्रेट हो चुका है मतलब हम कुछ भी कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन से हैंडल कर सकते हैं। Configure object definition is for only for corporate data model. For अच्छा succession data सॉरी ओके model, we have to go to ओके manage business configuration. yeah sorry manage business configuration so basically we can handle anything from manage business configuration। वहाँ पे आप जो भी देख रहे हो उसका ये MDF वर्जन है। अच्छा मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया फॉर कॉन्फ़िगरेशन और डेटा मेंटेनेंस के लिए। डेटा मेंटेनेंस के लिए है ना आपका पोर्टलेट। अच्छा पोर्टलेट्स है हमारे पास राइट। मतलब इसमें तो मास्टर डेटा ही जाएगा, और क्या जाएगा यहाँ पे? दो चीजें जा सकती है यहाँ पे। इसमें मतलब जब आप पोर्टलेट में जब आप डेटा मेंटेन करते हो, या तो अगर अगर किसी का नाम आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप नाम डालोगे वहाँ पे, तो कुछ ऐसे ड्रॉप डाउन में आ जाए ऐसा तो कुछ होगा नहीं। राइट तीन चीजें हो सकती है वहाँ पे, या तो आप अपना खुद का डेटा डाल रहे हो, आप नाम डालोगे, ओके, हम्म या फिर आप डालोगे मैरिटल स्टेटस जैसी एक फील्ड, ओके। मैरिटल स्टेटस में आपको फ्री टेक्स्ट तो है नहीं,
कि आपने कुछ भी लिख दिया वहाँ पे, या तो आप लिखोगे कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, जो भी है उस आपके इसका, ठीक है, ओके। सेपरेटेड हो, पार्टनरशिप में हो, जैसे भी हो, पर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? These are the pick list values. यस, दीज आर द पिक लिस्ट, इसके लिए हम लोग पिक लिस्ट मेंटेन करते हैं। Okay. So we use pick list management here, और मतलब बेसिकली पिक लिस्ट मैनेजमेंट ही यूज करते हैं ना पिक लिस्ट। पिक लिस्ट सेंटर करते हैं, अब तो माइग्रेट हो सॉरी। चुका है, अब सब कुछ पिक लिस्ट सेंटर में माइग्रेट हो चुका है। So everything has been moved from pick list management to pick list center. पिक लिस्ट मैनेजमेंट में आपको वो एक्सेल शीट मिलता है, उसमें सारा पिक लिस्ट हम्म। मेंटेन होता है, और पिक लिस्ट सेंटर देखा है आपने? तो बेसिकली अगर हमें कोई नया पिक लिस्ट बनाना हो तो यहाँ पे लाइक प्लस प्लस, वो प्लस प्लस पे जाके यहाँ पे पिक लिस्ट की वैल्यू डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल जेंडर है, ठीक है, नहीं, स्टेटस जैसे होगा इफेक्टिव स्टार्ट। जैसे ऑलरेडी जो बना हुआ है मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये डेमो सिस्टम है, पर लेट से जो एक मैंने बनाया है जेंडर करके, ठीक है, तो मैं सॉरी, ओके, तो इसमें इसमें मैं जेंडर पे जाऊंगा, मैंने क्रिएट कर दिया जेंडर नाम से, फिर उसके अंदर जाके मैं कोड्स बनाऊंगा। डबल डबल चेक। ये मैंने गलत जेंडर पे शायद, ये वाला राइट, करेक्ट। तो बेसिकली आपने जेंडर बनाया, उसके एक बार ऊपर जाइए, स्क्रॉल अप कीजिए, यहाँ पे हमने कोड दे दिया, फिर यहाँ पे हमने पिकलिस्ट वैल्यूज को डिफाइन किया दैट अंडर द जेंडर वी हैव जेंडर फीमेल, जेंडर मेल, लेबल क्या है उनका एंड द स्टेटस। तो ये सब इसमें कुछ, पेरेंट और पिकलिस्ट और हाँ, तो अगर आपको वो करना है कि कैस्केडिंग पिक लिस्ट करना है कि एक पिक लिस्ट चूज किया तो उसके अंदर और एक पिक लिस्ट आ जाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट पिक लिस्ट की बात कर रहे हो ना आप? हाँ। फिर हमें इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा पेरेंट पिक लिस्ट, ओके। और बाकी बाकी तो आप आइदर पिक लिस्ट होगा या फिर फाउंडेशन ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में, आपके एम्प्लॉयमेंट टैब में जाता हूँ, तो ये सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन है। जैसे लेट से मैं पोजीशन इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ, जब कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कोई पिक लिस्ट नहीं है, ये फाउंडेशन डेटा जो मैंने मैनेज डेटा में जो क्रिएट किया है वो है, या मैं बिजनेस यूनिट जो है, ये सब फाउंडेशन डेटा है, ओके, ये पिक लिस्ट तो नहीं है। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि हमने मैनेज डेटा में बिजनेस जो भी, यूनिट के अंदर जो वैल्यूज रखी है हाँ हाँ, वो वो सारे सारा कुछ ये है। कंट्री के हिसाब से सब कुछ का, हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन मैच करना चाहिए, नहीं तो। एक बार मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। लेट से एक एग्जांपल आपको देता हूँ, नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अच्छा, ये हमेशा एचआर है, ये एलिमेंट्स ही होते हैं ना एम्प्लॉय जो ऊपर मेंशन है। ओके, नीचे स्क्रॉल करना एक बार, फिर रूल्स भी हैं। ओके। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल, थोड़ा बहुत रूल्स पे काम किया हुआ है तो इसलिए आइडिया है। इसमें हमारा इवेंट टाइप में जो रूल्स होते हैं उसका बेसिकली ऑन सेव, ऑन इनिट और ऑन चेंज, ये सब रूल्स को थोड़ा सा स्टडी, मतलब बेसिकली आप बताएं इवेंट टाइप में आपके जो रूल टाइप होते हैं डिफरेंस क्या रहता है। हाँ, जो ऑन सेव में जब आप सेव करते हो, ऑन चेंज में जब आप जैसे ही चेंज करते हो वैसे ही वो ट्रिगर हो जाता है, मतलब ये। और फिर जो रूल है, बिजनेस रूल आपको लिखना आता है? हाँ, बिजनेस रूल थोड़ा, हाँ, किया है इस पे काम। हाँ, तो मैं आपको एक बिजनेस रूल लिख के बताऊंगा कि कैसे बिजनेस रूल काम करता है, या फिर आपको कोई भी वर्कफ्लो वगैरह भी ट्रिगर कराना हो तो वो बिजनेस रूल से ही होता है। कुछ भी वर्कफ्लो, लेट से नाम चेंज हो, या फिर कहीं पे कुछ प्रोपोगेट कराना हो कि यहाँ पे मैं चेंज करूँ तो उधर भी चेंज हो जाए, वो सारी चीज रूल्स हो जाएंगी। ये तो हो गया आपका HRIS एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ छोड़ के भी कुछ है, ओके, एम्प्लॉय बोलते हैं उसको। दिस इज द पोर्टल पार्ट ऑफ इट। इसमें स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं, बैकग्राउंड एलिमेंट्स होते हैं, दीज ये आर है। एम्प्लॉय। दिस इज बेसिकली टू डू विद द टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट में जो भी आता है वो सब कुछ इधर आता है, ओके। पर इसमें आप रूल्स नहीं लगा सकते।